हेलो हेलो हेलो, आप सब कृपया शांति बनाए रखिए। मुख्य अतिथि का आगमन हमारे मंच पर हो चुका है, इसलिए आप सबसे आग्रह है कि आप लोग प्लीज शांति बनाए रखें। कुछ ही समय में हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है। बाहर तो हो गया लाइव सेकंड देता हूँ, सेकंड वाला हो गया। I request you all to please keep your mobile in silent mode. मैम बोलो ना, माइक टेस्ट बोलो। हेलो चेक। चार्ज भी लगा दे।
सर मैं तो अभ्यास समझ में हूँ। जी जी चालू हो गया। फोटोग्राफ्स तो सर वो तो शुभम सर ही करेंगे, हम लोग तो फिर कैसे कर पाएंगे। ठीक है सर, एक बार मैं नीला सर तो बात करें। ठीक है, मैं नहीं वो सर रूम में था, मैं उनको कॉल कर सकता हूँ। अच्छा एक बार ठीक है सर, एक बार रुको ना, मैं चेक कर रहा हूँ मैं अपने तरफ से। ठीक है सर। जी जी हेलो 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 चेक, हेलो चेक।
A very good afternoon. I, Dr. RAWATPURA, And I, Dr. Madhvi Pandey, Assistant Professor, Department of Applied Science, Faculty of Science, welcomes to one and all present over here on the occasion of National Science Day 2024. Before we start our today's program, I request all the dignitaries on the dais to join for lighting the lamp. Now I request to all to stand up in honor of the state song. Now I request Honorable Vice Chancellor Professor S.K. Singh sir to welcome our today's special guest, Professor Dr. Anjana Sharma, Member Academic CGPRC, with a book.
we all gather here to celebrate the marvels of science, the ingenuity of scientists, and the endless possibilities that scientific explorations offers. Since 1999, this day was celebrated as National Science Day in India each year in honor of Indian physicist Sir Chandrasekhar Venkat Raman for the discovery of Raman effect in the year 1928, and he was awarded Nobel Prize for the same in the year 1930. The theme of National Science Day 2024 is Indigenous Technologies in Viksit Bharat. Under this theme, our students have participated in various competitions like poster making competitions, essay writing competitions, and also model making competition in various scientific fields. Now I request Professor S.K. Singh Sir, Honorable Vice Chancellor, SHRI RAWATPURA SARKAR University for welcome address. Sir, please. Thank you, madam. I would like to begin with seeking the blessings of Anand Sri Vibhusit Sri Ravi Shankar Maharaj Ji, who happens to be the founder as well as the Honorable Chancellor of this university. Chief guest of the function, Professor Sharma, a well-known scientist and also the Honorable Member Academics of Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission. Professor Shiv Kumar Pandey, he was to join us as one of the speakers, but he would not be able to join because his train has been delayed by more than 6 hours. Professor Shiv Kumar Pandey has been the Vice Chancellor of the Pandit Ravi Shankar University. Sitting on the dais, the Registrar of the University, Dr. Saurabh Kumar Sharma, Dean Academics, Professor Virali, Dean Faculty of Science, Professor Anubhuti Khosle. Sitting amongst the audience, my colleagues, teaching as well as non-teaching, and my dear students. At the very outset, I, on behalf of SRI RAWATPURA SARKAR University, and also on my own behalf, extend a warm welcome to the chief guest of the function and would like to convey my best wishes to all of you on the occasion of this National Science Day. As you know that the National Science Day is celebrated to commemorate the discovery of Raman effect by Sir C.V. Raman, a Nobel laureate. At the same time, this National Science Day is celebrated to acknowledge the significant contributions which have been made and which are being made by the scientists across the globe to make the earth a better place to live in. So I convey my best wishes to each one of you present in the audience on this occasion. As you know that SRI RAWATPURA SARKAR University was established in 2015 with a mission to provide low-cost, quality education to the youth of this country. And since inception, the university has been making sincere efforts. Here on the university campus, we do not try only to develop the cognitive faculty of the students, but our equal emphasis is also on character building, making them a global citizen who believe in Vasudhaiva Kutumbakam, one earth, one nation, one family, and one future. So beyond, the focus of this university is providing the domain-based knowledge
and at the same time making the students sensitive to the society, nation, and the globe. And we were told that the theme of National Science Day this year is indigenous technologies for Viksit Bharat. In fact, in pursuit of progress and development, countries often look towards the advanced technology and innovation from across the world. But I believe that it is equally important and essential to organize and to harness the potential of indigenous technology. In the context of India, embracing indigenous technology will be a very bold and pivotal step towards achieving the Viksit Bharat target. Indigenous technology in India are deep-rooted in its cultural heritage. The indigenous technologies have been getting transferred from one generation to another generation for the centuries. Practices like water conservation, water preservation, organic farming, Ayurveda, they do not only help in promoting the environmental sustainability, but they also help in upholding the rich Indian traditions which are integrated to the cultural identity of the country. So preserving and promoting these indigenous technology would mean safeguarding the cultural identity of our country. Because a country is known for its cultural heritage, cultural identity. And it will not only be safeguarding our cultural identity, but it will also be contributing significantly towards the sustainable economic development of the country. So I personally believe that unless the modern technology supported and supplemented by the indigenous technology based on our traditional knowledge, the Viksit Bharat target cannot be achieved. Viksit Bharat, you know that India got independence in 1947, and recently we had celebrated Amrit Mahotsav on completion of 75 years of our independence. In 2047, India is going to complete 100 years of its independence. And the country has set a very modest target. In 2047, India would be the developed country. So let us try to understand what this target is. What do we mean to achieve, or what do we mean to make the India a developed country by 2047? On the basis of development, the countries of the world could be divided into three categories: developing countries, developing countries, underdeveloped countries, or moderately developed countries, and the third category would be developed countries. So India currently is in the category of developing countries, underdeveloped, developing, and the developed countries. So, if we go by the per capita income, if the per capita income of any country is less than $1,000, it will be designated as underdeveloped countries, where the economy will be agrarian based, where the industrial development would be placed. When the per capita income of the individual is ranging between $1,000 to $12,000, it will be termed as the developing countries or the moderately developed countries. Its range is very high, 1,000 to 12,000. And third category is, of course, the per capita income more than $12,000. So let us see where does the India stand? In terms of per capita income, it is $2,600. So in order to become the developed country, we have to travel a journey from 2,600 to 12,000, more than 12,000.
So it's a very typical complex journey. Unless we all come forward with an oath to contribute our best to this journey, perhaps a journey from 2,600 US dollar to 12,000, more than $12,000 would not be possible. So this is the one issue. So how this can be traveled? Of course, without the help of science and technology, this journey perhaps could not be possible. Today, India's GDP, or you can say the national income is around 3.8 trillion US dollar. And we are considered to be the fifth largest economy of the world after US, China, Germany, and the United Kingdom. The GDP of United States of America is more than 26 trillion. 26 trillion, more than 26. That of China is more than 17 trillion. And of course, the Germany and Japan, they are 4.4 and 4.2 trillion. And our India's economy is 3.8. So it is said that by 2025, which after 2027, after 3 years, India economy or the GDP would rise to more than 5 trillion. And once our GDP becomes more than 5 trillion, we would be the third largest economy of the world. It is also said that the current per capita income of 2,600 US dollar would rise to 4,000 US dollar by 2030. And by that time, our economy will get to 6 trillion dollars. So this is the different milestones. It is also said that 2047, when India would be completing 100 years of its independence, the economy of India would be to the tune of 30 trillion, and the per capita income would be around 21,000 US dollars. So we have to go a very long way. This journey is very complicated. Setting a target is simple, but achieving the target and surpassing that target is the real challenge. And that the real challenge, each and every citizen of the India, and particularly each and every student, every youth, and when we think of the youth, we go to the academic institution where millions of the students are studying. So the responsibility to take the India from 2,600 US dollar per capita income to more than 12,000 US dollar income will be on both shoulders. With these words, and let me take this opportunity to thank and express my gratitude to Professor Anjana Sharma, the Honorable Member Academics of CDPRC, and the Chief Guest of the function, for having spared time to raise the occasion and to share her views with our students. Once again, my best wishes on the occasion of National Science Day. Let's celebrate this day because the scientists have contributed significantly to make our life more easier, more joyful, more comfortable, and help us to what we are today. Thank you very much. Thank you so much, sir. Now I request Dr. Anubhuti Kosle, Dean Faculty of Science, to address today's program. First of all, good afternoon, all of you. With the blessings of Param Pujya Maharaji, today's chief guest, Professor Anjana Sharma, Honorable Vice Chancellor, respected Principal Sir, Dean Academic Sir, all HODs, principals, and my dear students. Today we are gathered here to celebrate the National Science Day 2024. Every year we celebrate the National Science Day on 28th February to remember the discovery of Sir C.V. Raman facts. The C.V. Raman sir got a Nobel Prize in the field of physics in the year of 1930 on this fact
we are celebrating the National Science Day. On 1987, February 28, the Indian government noticed the first National Science Day to promote the science and technology for our society. Today we are celebrating the wonder of science and scientists who are doing their bit of marks our lives better with new significant innovations. Science is just not a subject, science is a phenomena and around with us, science is an endless adventure that never ends. There is always something that will keep our life alive and excited through our lives. The theme of 2024 National Science Day is Indigenous Technology for Viksit Bharat. This year we promote the indigenous technology to develop our nation and make us proud us in an international level. On the occasion of National Science Day, Faculty of Science organized the various activities like poster making, working model, and essay competition to promote the science and innovation temperament for our students. Let's celebrate the spirit of scientist that is an explorer the unknown and have led passion to learn new things and around for the welfare of our humanity. At last, rise and shine, see the sun and explore the sign around with us. Wish you happy National Science Day. Thank you, sir. Now I invite Dr. Madhi Pandey to proceed the program. Good afternoon, everyone. It is with great pleasure and honor that I, Dr. Madhi Pandey from Department of Applied Science and Faculty of Science, extend a warm welcome to the distinguished Professor Dr. Anjana Sharma as our special guest, who serves as a beacon of knowledge and inspiration in our academic community. Presently, she serves as an academic member at CGPURC and previously worked as a Pro-VC at Jaipur National University. She has also worked as professor at Rani Durgavati University, Jabalpur. Professor Dr. Anjana Sharma's contribution to the field of life science and her dedication to excellence in teaching and research have made a profound impact on our institution and beyond. Her commitment to nurturing young minds and fostering a culture of innovation is truly commendable. We are privileged to have Professor Dr. Anjana Sharma among us, and now I would like to invite her to share her expertise and insights. Dignitaries on the dais, Professor S. K. Singh, Vice Chancellor, RAWATPURA SARKAR University, Dr. Anubhuti Khosla, Dean Science, Dr. Birali, Dean Academics, Dr. Saurabh Sharma, Registrar, SRI University, dignitaries sitting off the dais, all the invited guests, as well as all the students present over here in the auditorium. First of all, I would like to thank the organizing committee for inviting me to be part of the National Science Day on 2024. It's my privilege to be with you all. Thank you very much. As we all know that good ideas surely needs wings. With these words, I would like to remember that in September 2014, our Honorable Prime Minister, he unveiled for the development of Made in India strategy. And from that time, continuously work is going on in India for making India a developed nation. As the Vice Chancellor has already stated that we have to work hard to achieve this goal. And as you all know that National Science Day, it is celebrated all over India since 1987, though it was announced in 1986, started celebrating it from 1987,
every year there is a different theme for celebration of this National Science Day. And the aim behind this different theme is that the scientists from the lab should come in collaboration with the society and work in the field for the development of human beings. With this aim, National Science Day is celebrated every year. And as we all know that it is celebrated in honor of the Raman effect discovered by Dr. C.V. Raman in 1928 on this very day, and he got Nobel Prize in 1930. And since then, we are celebrating every year this day as the National Science Day. And National Science Day theme for 2024, as we all know that is indigenous technology for Viksit Bharat, was announced by Union Minister of State, Science and Technology, SHRI Dr. Jitendra Singh. And the National Science Day theme for this year celebration reflects a strategy focused on promoting public appreciation for science, technology, and innovation and accomplishment of Indian scientists to address challenges through homegrown technology for all well-being. The National Science Day, as we all know, with this theme for this particular year, not only marks a new era, but also presents an opportunity of public and scientific fraternity, both domestically as well as internationally, to collaborate, work together, and contribute to the well-being of India and humanity as a whole, while emphasizing the importance of making India Atmanirbhar through science. It underscores the need to address subjects that hold significance for humanity as a whole. In the wake of recent scientific achievements, it may be underscored that the rising trajectory of India over past 10 years is being witnessed globally. We are globally among the top 5 countries in scientific research publications. We are 40th in Global Innovation Index, and now about in 2015, it was near about 81st rank in the number of patents filed by India, and now we are at the 40th rank in this. So we have worked hard, and in the last 2 decades, last 2 decades, lots of work has been done in the field of science and technology, especially keeping India in mind. So at this, due to strengthening of science and technology ecosystem in the nation in fields such as artificial intelligence, astronomy, solar and wind energy, semiconductors, climate research, space research and biotechnology, Indian scientific breakthroughs have reached from the land to moon. With the successful landing of Chandrayaan-3 on south pole of moon, India became the first country to achieve this feat. Now, as the theme, it shows the indigenous technology. The question arises, what is indigenous? Indigenous is the technology which is used by the inhabitants of a country or a region, and it is collaborated with the cultural heritage of that particular country or that particular region. So whatever technology is used by that particular region or country is termed as indigenous technology, and as we all know that lot of scientific technology is available in India in the remote areas, and they have been successfully used by the population of those particular regions. But problem is that we from the urban areas have not explored those parts, and we have not scientifically
validated the technology which are available over there. So the validation of the scientific technology or the processes which are available in our remote areas which are explored need to be assessed and worked out by the students, especially the students and the scientists who are working in various fields. Once we are able to validate those indigenous technology, we can definitely reach the developed, become the developed country. And for this reason only, emphasis has been given on the indigenous technology available in India. Now, for example, we can say that when we talk about indigenous technology, if we talk about the farmers, you know that if a farmer lives in a village of Rajasthan, that farmer will first explore the weather condition of that particular area, the soil quality of that particular area, and the rain condition of that particular area, the terrain of that particular area, and then only he will decide that which type of water irrigation system should be there. Now, if we start directly use the modern technology in that particular area, it may work, it may not work. But the indigenous technology, because वो अनुभव के साथ उस किसान के पास है, तो हमें उस अनुभव को एक साइंटिफिकली वैलिडेट करके उस टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चाहिए। और जब भारत स्वयं की टेक्नोलॉजी स्वयं के लिए यूज करेगा, तो वो एक कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी रहेगी और साथ ही सारा रॉ मटेरियल हमको उस पर्टिकुलर जगह पे उपलब्ध हो जाएगा। तो इसलिए हमें इंडिजिनस टेक्नोलॉजी पे फोकस करके काम करना चाहिए। एक छोटा सा एग्जांपल और है, जैसे मान लीजिए हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, तो इन द मॉडर्न टेक्नोलॉजी, फॉर एग्जांपल वी गो फॉर द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पार्ट. We in the building construction part, what we do, we from the factory we take the pole and the line for the construction of a building. But in the indigenous technology, what will happen? Normally the charcoal is used as well as seashell is used in the replacement of these factory made products. So when we use this type of things which are available in that particular area and develop a technology, it becomes a cheaper technology and definitely it helps in the development of a nation, because it will involve the persons who are living in that particular area, and it will definitely help to for the growth of the nation. So I would like to share some of the indigenous technology which are available in India, and which will definitely give an idea to the growing scientists who are sitting over here, that they too can work and become a good scientist and play a vital role in the development of nation and make India a Viksit Bharat. Now, there is a technology available known as Dronachari crop duster. Dronachari duster technology, it was simply when a person, Dulal Adhikari, he is in Calcutta, and when he was like going through the Disney channel, he was watching the Disney channel. At that time, he observed that because he was very much interested in making the plane models. So while observing the Disney channel, he used his passion of making the model of the plane and used this idea to develop a drone assisted pesticidal spray. And with the help of this drone, he developed a machine which can spray the pesticide in the agriculture field. जो उसने टेक्निक डेवलप की, वो टेक्निक में 1 बीघा में 10 से 15 मिनट में पूरा पेस्टिसाइड स्प्रे हो जाता था, जबकि जब पहले किसान करते थे तो उन्हें करीब आधा घंटा 3 घंटे लगते थे उस 1 बीघा जमीन में पेस्टिसाइड को स्प्रे करने के लिए। तो आइडिया डेवलप करने के लिए आवश्यकता नहीं है कि हम
कि हमें हमारे पास किसी दूसरे तरह का बैकिंग हो तभी हमारे पास दिमाग में आइडिया आएगा. Only thing is that whatever we are doing, wherever we are working, we should be focused on the development part, and whatever is happening around us, we should try to, and whatever passion we should try to use that passion for development of nation by one or the other means. तो इस तरह ये जो उन्होंने टेक्नोलॉजी डेवलप की थी, जो ड्रोन बनाया था, ये जीपीएस असिस्टेड था, तो उसके कारण वो जिस भी एरिया में स्प्रे करना चाहते थे तो ही वाज एबल टू डू इट, और उसका कॉस्ट हार्डली 40,000 रुपीस था. और ये जो ड्रोन जीपीएस असिस्टेड ड्रोन था वो पेस्टिसाइड स्प्रे, जिसका नाम उन्होंने द्रोणाचार्य क्रॉप क्लस्टर दिया था, वो काफी ऊंचाई पर भी काम करता था और तेज हवा में भी वो ये स्प्रे का काम कर सकता था. इसी तरह से एक अभय नाम की का ऐप डेवलप किया गया था. दिस अभय ऐप वाज डेवलप्ड बाय विवेक मोहन, who was the scientist in Kochi University of Science and Technology. And ये जो अभय था, this was very much useful for the women. जब वुमेन किसी परेशानी में आती हैं तो घबराती हैं, और वो घबराहट जो है उससे जो वेव्स निकलती है उस घबराहट के समय में, या उस घबराहट जो हार्ट बीट उनकी बढ़ जाती है, इसको ये डिवाइस जो है कैप्चर करता है, और ये इस वेव्स के कारण वो इमरजेंसी कॉल कर सकता है. सो द विदाउट यूजिंग एनी अदर प्लेटफॉर्म, with this waves, the emergency call reaches to the concerned person, and it is also assisted by the GPS, so that wherever the woman is there, it can be tracked and by the police also. So it is a very helpful device for the women. तो ये सिंपल छोटे से इनोवेशन के द्वारा इस तरह की डिवाइस विवेक मोहन जी ने डेवलप की थी. इसी तरह एक त्रिनेत्रा एक डिवाइस है. त्रिनेत्रा डिवाइस बैंगलोर के एक टेक्निक टैक्स सेवी के चंद्रशेखर और श्याम वासुदेव राव ने डिवाइस की थी. और ये जो त्रिनेत्रा डिवाइस है, इट्स अ पोर्टेबल नॉन इन्वेसिव आई स्क्रीनिंग डिवाइस which can detect glaucoma, cataract, diabetic retina, cornea problems, and eye lens refractive error. तो इस डिवाइस का यूज करके किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह की सर्जरी के लिए नहीं जाना है, बट सिंपली विद द स्क्रीनिंग ऑफ द आईज, the doctor or the ophthalmologist can find out that what ailments is there with the patient. बताने का मकसद आप लोगों को ये है, ये सारी डिवाइसों का, कि आदमी यदि ध्यान से किसी काम को करता है और अपने जिसका जो भी पैशन हो, हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ हॉबी तो होती ही है, उस हॉबी को यदि वो प्रॉपर्ली यूज करे और साइंटिफिक थिंकिंग हो उसकी, तो वो कुछ ना कुछ ऐसा काम कर सकता है जिससे आगे जाकर के लाइफ में उसे फायदा मिल सकता है. इसी तरह से एक डिवाइस है पावर व्हील. ये पावर व्हील डिवाइस एक स्टूडेंट है, भोपाल का स्टूडेंट है सुशांत पटनायक, जो 11th क्लास में पढ़ रहा था. जब उस समय उसको ये आइडिया आया, वो उसने देखा कि व्हील चेयर पे एक व्यक्ति जा रहा है और वो बहुत दुखी हो गया उस व्यक्ति की कंडीशन को देख करके. तो देन ही थॉट of developing a power wheel device, and he made the apparatus. उस apparatus में जो it was sort of a breathing apparatus, जिसमें यदि breathe करते हैं तो breathe करने के बाद it gives the direction to the wheels, कि wheels को किस तरह जाना है, किस तरफ जाना है. तो it helps the wheelchair patients in that way. And then later on उन्होंने इस डिवाइस को मैन्युफैक्चरिंग के लिए कंपनी बनाई, जिसे साइंटिफिक इनोवेशन फाउंडेशन का नाम दिया गया, और इसमें उन्होंने इसके अलावा भी कई गैजेट डेवलप किए. तो जब एक 11th क्लास में पढ़ने वाला बच्चा रास्ते में चलते हुए व्हील चेयर पे देख करके ये आइडिया ले सकता है कि उसे किसी डिवाइस को बनाना है, तो
आप ये नहीं कह सकते कि फंड की कमी है या हमें सपोर्ट नहीं है. दिस इज द thinking process which is not perfect, and that's why a person is not able to develop certain scientific convert certain ideas into scientific innovations. So the thing is that the student has to be focused on whatever is going on around their surroundings, and should try to find out what they can do with this, and try to develop their hobbies, convert their hobbies into some fruitful ideas. Then in Mumbai-based packager Vinay Mehta, he created a device, Vented. It was found that जो पिज्जा आता है हमारे घर में, वो पिज्जा थोड़ी देर बाद सॉगी हो जाता है. और देखिए कितनी सिंपल डिवाइस बनाई गई है. वो आप लोग भी पिज्जा खाते हो, सारे बच्चों को पिज्जा पसंद है, पर कभी उनके दिमाग में ये नहीं आता कि ये पिज्जा हमारा ठीक ठाक रहे. तो इसके लिए उन्होंने एक ऐसा पिज्जा का डब्बा बनाया, वो कार्डबोर्ड का डब्बा जो आपके यहाँ आता है, उसी डब्बे में उन्होंने इनर एंड आउटर वॉल पे होल्स कर दिए और सेंटर वॉल को ऐसा रहने दिया. अब ये डिवाइस के कारण क्या हुआ, वाटर वेपर्स जो भी भाप निकलती थी वो इनर वॉल से सेंटर वॉल की तरफ चली जाती थी, और आउटर वॉल में जो उसके कारण आउटर वॉल में ये जो सराउंडिंग का टेम्परेचर और इनर की साइड नहीं आ पाता था. तो जो टेम्परेचर है वो तो प्रॉपर्ली मेंटेन रहता है, पर मॉइस्चर कंटेंट आपका कंट्रोल हो जाता था. तो एक छोटा सा दिमाग लगा के सिर्फ काम करने से उन्होंने एक डिवाइस बना ली. और अब ये जो डिवाइस है ये कई सारी कंट्रीज में जो है उनकी ऑलरेडी पेटेंटेड हो चुकी है. और अबाउट 100 कंट्री में ये डिवाइस पेटेंट हो चुकी है. तो कुछ नहीं लगा, ना पैसे लगे उनके और ना उनको ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, पर हाँ सोच को बदलना पड़ा. उस सोच को बदलने की आवश्यकता है, और जो कुछ भी हमारे यहाँ इंडिजिनसली अवेलेबल है उस चीज का प्रॉपर उपयोग करके कुछ नया बनाना, नए सोचने की हमें आवश्यकता है. ऐसे आप लोगों ने गीजर के बारे में सुना होगा कि कई जगह पे पानी गर्म करते हैं. पानी गर्म करने के लिए जो गीजर हम यहाँ इलेक्ट्रिसिटी यूज करके काम में लेते हैं, वो कई सारी जगह पे फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है. तो इस तरीके के ये भी एक करीब काफी समय पहले पंजाब के एक व्यक्ति ने देसी गीजर बनाया था, जिसमें जो गैल्वेनाइज्ड शीट रहती है, उस शीट को जो काउ डंग है उसको फ्यूल के रूप में यूज करके उन्होंने वो किया था. और वो अभी क्लेम करते हैं कि वो 3 मिनट के अंदर पानी को काफी ज्यादा टेम्परेचर तक गर्म कर सकते हैं. एंड इट इज कॉमनली यूज्ड. ही इज सेलिंग दिस डिवाइस. तो इस तरीके से ये डिवाइसेस को पेटेंट किया जा सकता है, इनको सेल किया जा सकता है. यू कैन अर्न मनी, यू कैन हैव योर ओन स्टार्टअप, बट आपको करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि हमें करना क्या चाहिए, कर क्या सकते हैं. आप लोग उससे इंडिजिनस टेक्नोलॉजी और ई कॉमर्स से परिचित हैं. आप लोग पेमेंट गेटवे से सब लोग यूज करते हैं, उससे परिचित हैं. जो हमारे इंडियन पेमेंट गेटवे हैं, ये सब इंडिजिनस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आते हैं, जो कि हमारे यहाँ के ही साइंटिस्ट ने डेवलप किए हुए हैं. और कई सारी डायग्नोस्टिक किट डेवलप की गई हैं जिनके द्वारा simple one sample with this microgram of the sample can give hundreds of results, and you need not have to go to the doctor many times. अभी 3 फरवरी को आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा कि जो सीडेक है, सीडेक ने 3 टेक्नोलॉजीज ऐसी बनाई हुई हैं जिनको कि उन्होंने मार्केट में हैंडओवर किया है. ये जो अभी 3 फरवरी को एक IIT दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत ही ये 3 टेक्नोलॉजी अभी मार्केट में दी है IIT दिल्ली सीटेक वालों ने. और ये 3 टेक्नोलॉजी इंडिजिनस जो टेक्नोलॉजी है, वो एक तो अपना
थर्मल कैमरा है और एक है सीमॉस कैमरा और एक है फीड मैनेजमेंट सिस्टम। ये 3 टेक्नोलॉजी अभी मार्केट में जो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है, ये अभी मार्केट में सीटेक द्वारा दी गई है। और ये जो थर्मल कैमरा है, ये बिल्डिंग इंडस्ट्री में काम आता है। इस थर्मल कैमरा के द्वारा कितना हीट लॉस हो रहा है या पुअर इंस्टॉलेशन कितना पुअर है या ठीक है या वाटर लीकेज है या नहीं है, ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में इसके बारे में पता लगता है। साथ ही ये मेडिकल फील्ड में भी यूजफुल है। यहाँ तक कि विद द बॉडी चेंज इन द बॉडी टेम्परेचर के द्वारा हम ये भी पता लगा सकते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर किस स्टेज में है, उसका भी डिटेक्शन इस सिंपल थर्मल कैमरे के द्वारा हो सकता है। और ये टेक्नोलॉजी कई सारी अभी इंडस्ट्रीज को हैंड ओवर कर दी गई है आफ्टर पेटेंट। इसी तरह ये जो सीमॉस कैमरा है, it was used to create the image in digital camera या CCTV कैमरा है या डिजिटल वीडियोस वगैरह है, उसकी इमेजेस को बेहतर बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। और जो फील्ड मैनेजमेंट सिस्टम है, इट इज यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग द ट्रैफिक सिस्टम। और इसके द्वारा व्हीकल को ट्रैक भी कर सकते हैं कि किस जगह पर है। तो इस तरीके से ये टेक्नोलॉजी को भी 3 कंपनीज को दिया गया है। So what I wanted to communicate to you people that because most of the students are sitting over here, I just want to say that don't celebrate the National Science Day as a day only. Take some message from this National Science Day, and as it is 2024, the theme is Indigenous Technology for Viksit Bharat. So create some ideas, develop some ideas, and you can go for the patenting of those ideas, and then you can go for the startup. So आपको किसी और पे निर्भर करने की जरूरत नहीं है for your job or anything else. You can have your own job. You can become a job creator also with this philosophy. कई बार कहते हैं भाई हमारे पास तो इतना पैसा भी नहीं है, हमें कोई बताने वाला नहीं है। तो आपको याद होगा या आपने पढ़ा होगा कि एक जो साउथ में जो अपना सुपारी होती है, सुपारी के पत्तों से सिंपल पत्तल और गोले बनाने का काम किया गया, which has been replaced the plastic plates and cups. Do you need anything for this? No, it was a simple idea, and that technology is being used not only in India but abroad also. आप अभी अमेरिका वगैरह में कई जगह चले जाइए, आपको वहां पर प्लास्टिक के कप्स या थर्मोकोल के कप्स या प्लेट्स नहीं मिलेंगे। You'll get this thing, and इसको एक बड़ा अच्छा वो माना जाता है कि हमें ये प्रोवाइड किया जा रहा है, the biodegradable product। तो हर चीज के लिए पैसे की आवश्यकता नहीं होती है, विजन की आवश्यकता होती है। मैं आप सबको ये शुभकामनाएं देना चाहूंगी कि आप लोग कुछ करें। आप सभी लोग अपने टीचर्स के साथ मिलकर के जो भी आपके छोटे बड़े आइडियाज हैं, उन आइडियाज को शेयर करके कुछ ना कुछ बेहतर करने की कोशिश करें, ताकि आप विकसित भारत बनने के भारत को विकसित भारत बनाने में सहयोग प्रदान कर सके। मैं अंत में उन सभी प्रतिभागियों को बधाई देना चाहूंगी जिन्होंने अभी साइंस डे के उपलक्ष्य में जो प्रतियोगिताएं यहाँ पर हुई हैं उसमें स्थान प्राप्त किया है, और उन सभी को शुभकामनाएं देना चाहूंगी जो किसी न किसी कारण से प्राइज जिन्हें नहीं मिल पाया है। आगे मेहनत करिए, आपको भी जरूर मिलेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। Ma'am, your presence here today filled us with immense pride and gratitude. We eagerly anticipate the wisdom and inspiration you imparted to us during this event. Now, before we commence with the certificate distribution, I would like to take a moment to express our sincere appreciation to all the dignitaries contributed to the success of this event. Now, without further delay, let us proceed with the distribution of certificates to our deserving recipients. So I request Dr. RAWATPURA to kindly announce the name of winners in several competitions held today.
Thank you, ma'am. So, the first prize for working model goes to Sunita Chura, MSc Physics, 4th semester. Come first. The second prize goes to Prateek Yadav, MSc Physics, 4th semester. And the third prize for working model goes to Manjula Sahu, MSc Physics, 4th semester. Now the winners for poster making competition. The first prize goes to Shashank Nag, BSc Physics Honours, 2nd semester. The second prize goes to Ruchi Nag, BA Arts, 4th semester. And the third prize for poster making competition goes to Diksha Das, BSc Nutrition and Dietetics, 4th semester. Now, the winners for essay writing competitions are: the first prize goes to Akansha Mahakur, BSc Honours, Chemistry, 4th semester. And the second prize goes to Utsav Sahu, B Pharmacy, 6th semester. The third prize goes to Supriya Hawaldar, BSc Nutrition and Dietetics, 4th semester. Before we proceed further, let us take a moment to extend our heartfelt felicitations to our esteemed guests for gracing us with their presence. We are deeply grateful to Dr. Anjana Sharma for taking the time out of her busy schedules to join us today. Now I would like to call our respected VCs to felicitate Professor Dr. Anjana Sharma with memento, shawl and present. Thank you, ma'am, for gracing us with your presence. Before we conclude, we have the privilege of calling upon a distinguished individual whose leadership and support have been instrumental in making today's event possible. I kindly request Professor Dr. Saurabh Sharma, our esteemed registrar, to share his words of appreciation and gratitude with us. नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासो ततो जयमुदीरयेत्। विघ्नहर्ता भगवान गणपति, ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी मां भगवती शारदा,
प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलाधिपति अनंत श्री विभूषित पूज्यपाद महाराज श्री की मानसिक उपस्थिति को प्रणाम करते हुए मंच पर विराजमान विश्वविद्यालय का शीर्ष नेतृत्व कर रहे अद्भुत शिक्षाविद माननीय कुलपति जी, शिक्षा जगत की जानी मानी हस्ती, अपने वैज्ञानिक ज्ञान से विद्यार्थियों के प्रकाश पुंज को उत्तेजित करने वाले CGPRC के मेंबर एकेडमिक्स प्रोफेसर अंजना शर्मा जी, इस विश्वविद्यालय के स्तंभ डीन एकेडमिक्स प्रोफेसर बिलाली जी, आज के साइंस डे के संयोजक डीन साइंस प्रोफेसर अनुभूति कौशले मैडम, इस कार्यक्रम का सफल और कुशल संचालन कर रही विश्वविद्यालय की शिक्षिका डॉक्टर माधवी जी, डॉक्टर रूपल जी, विज्ञान दिवस के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, यहाँ से कुछ सीखने के लिए, भारत का भविष्य और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को धारण किए हुए विश्वविद्यालय के सभी विद्यार्थी, भारत आज विज्ञान दिवस मना रहा है। जब कोई दिवस मनाया जाता है तो हमारी भारत की संस्कृति है कि उसको उत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो आज पूरा राष्ट्र विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान के माध्यम से किए गए कार्यों को एक उत्सव के रूप में मनाना चाह रहा है। इसलिए आज की थीम थी कि भारत का जो ज्ञान है वो भारत में बनी हुई वस्तुएं भारत के लोगों के माध्यम से भारत के विकास में सहयोगी बने, इसलिए आज के इस दिन की थीम दी गई। 2047 में जब भारत विकसित भारत बनेगा तो निश्चित रूप से कोई बाहर से कोई वैज्ञानिक आके हमारे भारत को विकसित नहीं बनाएगा। हमारे अपने अंदर के विद्यार्थी जो आगे आने वाले सालों में अपने ज्ञान को समायोजित करके और वैज्ञानिकता का परिचय देंगे। ये भारत की संस्कृति है। प्राचीन काल से ही भारत वैज्ञानिक रहा है। भारत के ऋषि मुनि, चाहे ऋषि वशिष्ठ हो, विश्वामित्र हो, कणाद हो, नागार्जुन हो, वाराहमिर हो, ये सब भारत के वैज्ञानिक थे। हनुमान चालीसा में तो कहा गया है, जुग सहस्त्र योजन पर जानो। पहले ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी कल्पना के आधार पर बता दिया कि सूर्य की पृथ्वी से दूरी क्या है। चंद्रमा पर हम आज पहुंच रहे हैं, लेकिन चंद्रमा का हमसे संबंध है, क्योंकि पृथ्वी हमारी माँ है और माँ के निकट माँ का भाई चंद्रमा मामा होता है। तो जब वैज्ञानिकता ढूंढते हैं तो वैज्ञानिकता हमारे संबंध के आधार पर चलती है। चंद्रमा ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी की बात करूं, एस्ट्रोफिजिक्स की बात करूं, चंद्रमा मन का कारक है। सूर्य ज्ञान का तेजस्वी प्रकाश है। जितने भी नवग्रह हैं वो खगोलीय घटना जो ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई है उसके नित्य नूतन नए नए आविष्कार करते हैं। भारत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और निश्चित रूप से भारत में जितने भी शिक्षण संस्थान हैं, जहां जहां से भी हमारे युवा अपने ज्ञान को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और जिस प्रकार से वैज्ञानिक दृष्टिकोण के माध्यम से हमारे शिक्षक उन विद्यार्थियों को ज्ञान से लाभान्वित कर रहे हैं, निश्चित रूप से हमारा भारत विकसित बन के रहेगा। विज्ञान के इस उत्सव में श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने कुछ विज्ञान की प्रदर्शनी के माध्यम से कुछ वर्किंग मॉडल बनाए और संदेश दिया कि हम भी कुछ कर सकते हैं। पूर्व में वक्ताओं में मैडम ने कहा कि छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी सोच, जो आइडिया है, उस आइडिया को हमें अपने अंदर से निकालना है और कहीं ऐसे प्लेटफॉर्म पे लेके आना है। तो विश्वविद्यालय संकल्पित है
कि हम प्रयास करते हैं, हमारे शिक्षक ऐसे प्रयास करते हैं कि अपनी क्लास के अंदर वो क्लास को इनोवेटिव लेबोरेटरी बनाते हैं, नया नया ज्ञान देने का प्रयास करते हैं, जिससे भारत के भविष्य में आने वाले नए वैज्ञानिक पैदा हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे पाठ्यक्रम हैं जिनमें केवल वैज्ञानिक ही नहीं और अन्य रूप से भी ऐसी कलाकृतियों का जन्म हो रहा है जो निश्चित रूप से इस विश्वविद्यालय को शिक्षा में अग्रणी स्थापित कर रहे हैं। इस मंच के माध्यम से केवल विश्वविद्यालय का इतना ही उद्देश्य है कि आपके अंदर जो छुपा हुआ टैलेंट है वो बाहर निकले। इस मंच के माध्यम से केवल इतना ही आह्वान किया जाता है, जो आपके भीतर कुछ छुपा है वो डिस्कवर हो जाए। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर अंजना शर्मा मैडम आई, अपना व्यस्ततम समय से निकालकर बहुमूल्य समय है दिया, हमारे विद्यार्थियों को मार्गदर्शन किया। मैं विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आपका धन्यवाद करता हूँ, कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि आपने इस सदन को सुशोभित किया और हम सबका मार्गदर्शन किया। यहाँ सभी उपस्थित भारत के भावी वैज्ञानिकों को शुभकामनाएं और मंगल कामनाओं के साथ कि निश्चित रूप से यहाँ का प्रत्येक विद्यार्थी अपने अंदर वैज्ञानिकता को उजागर कर सके। धन्यवाद। Thank you, sir, for your inspiring words and for your continued dedication to our institution. As we wrap up today's event, I want to express our heartfelt gratitude to everyone who made it possible, to our distinguished guests, participants, and organizers. Thank you for your invaluable contributions and commitment to excellence. Your passion and dedication have made this event a resounding success. Thank you all for being a part of this memorable occasion.